Okay, so good evening again. So in the last class, we have completed, I guess, 7 questions. All right, and we have to solve eighth and ninth question. Okay, so before that, everyone please put your attendance, and then we can continue. Done, everyone? One, two, three, four. Four students have put their attendance. Five. Vaishnavi, Ayush, put your attendance. Okay, sorry, both Ayush have put already. Vinith, okay, Vinith is also there. All right, no issues. So those who haven't marked their attendance, please mark it. Okay, and we will continue with our topic. That is, we have learned about सर्ट्स in the last class. What are सर्ट्स? बराबर हमने लास्ट क्लास में सर्ट के बारे में सुना है या फिर पढ़ा है. And we have solved few examples also. So what we are going to do in this class, we are going to solve this question number 8. Okay, so let me just change the pen color. So solve this. How do we solve this? Square root of 98 divided by square root of 2 is there. All right, so how can we write like this? Can anyone solve this? Can anyone solve this? What can be the answer? क्या आंसर रहेगा? हमने सीखा है ना, अगर आप लोग भूले नहीं हो तो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे. अगर भूल गए हो तो प्रॉब्लम है. ऑल राइट, आई गेस आप लोग भूल गए हैं. सो 98 को हमें क्या लिखना पड़ेगा? 98 को हमें लिखना पड़ेगा 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 को हम एज इट इज रखेंगे. अभी ये जो 49 है ये आउट ऑफ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये क्या रहेगा? 7 अंडर रूट 2 divided by under root of 2. So under root 2 will get cancelled and the answer will be 7 only. फाइन, सबको समझ में आया? इस तरीके से हमें निकालना है. ओके, सो बाकी सारे भी हमें सॉल्व करने हैं. everyone is with me. Kadambari and Ayush has only responded. I need answers from everyone. ठीक है? Yeah, good. So as I told you, this is how we have to solve the problems. Now take the next problem. How do we solve next problem? Try solving it. Sir, you have wrote 48. Yeah, it is. Yeah, it is looking like 48, but it is actually 49. Okay, it was 49 only, but it was looking like 48. Okay, now it is 49. Fine. Yeah. Now take the next question. Next question. Take the next question and solve it. How do we solve this next question? See, we have 125 divided by under root of 50. So under root of 125 divided by under root of 50. How do we write this? We will write this like 25 into 5 divided by under root 25 multiplied by 2. Okay, so ये 25 जो है वो कट हो जाएगा अंडर रूट वाला, या फिर वो बाहर आके 5 बनेगा और वो कट हो जाएगा. ओके, इट इज वन एंड द सेम. So what will be the final answer? Final answer will be under root of 5 by 2. This will be the final answer. Did you understand this? Okay, fine. So इसी तरीके से हमें बाकी सारे भी सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो बाकी सारे आप लोग सॉल्व कर लेना. नाउ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. सो हाउ डू वी डू इट? We just have to multiply and divide by the rationalizing factor. So what will be the rationalizing factor for the first one? It will be root of 5 only. So how do we rationalize this? We will rationalize this like 3 divided by under root 5 multiplied by under root of 5 divided by under root of 5. So it becomes
3 under root 5 divided by 5 only. Under root of 5 and under root of 5, that becomes 5. So this is the rationalized form, or the we have rationalized the denominator. Okay, so solve this everyone. How do we rationalize this? And I have already told you how do we do this. We have to multiply and divide by a rationalizing factor. So rationalizing factor can either be 9 root of 3, or it can be only root of 3 also. Okay, so what we are gonna take here, we are going to take 9 root of 3 divided by 9 root of 3. So 9 6 are 54, 54 root of 3 divided by 9 nines are 81 and multiplied by 3. So 81 twos are 162, 81 threes are how much? 243, isn't it? So the final answer will be 54 under root 3 divided by 243. I hope you understood this. How do we calculated this? Isn't it? So if you divide by 3, so it can be again reduced. All right. So there are several ways, but our motto is like de d- we have to rationalize the denominator. The term in the denominator should be in the rational form. It should not contain any. Okay, you have a doubt. All right, Vedant, you can turn on your mic also. No issues. Vedant, ask your doubt. Vedant, are you there? Vedant, instead of typing, you can just put your mic on. Ask your doubt in Hindi, Marathi, English. Okay, sir. Sir, how did square root 10 to square root become multiplication? Square root 3 into square root 3. Which question are you talking about? First one or the Sir, fourth one? fourth one. Okay, fourth one. So I'll explain it again. Huh? See, uh, fourth one. Okay, so it is 6 divided by 9 root of 3 is there. So we have to rationalize the denominator so that we will multiply and divide with the help of rationalizing factor, that is 9 root of 3, isn't it? Now 9 6 are 54 and under root of 3 as it is, isn't it? तो न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी डिनोमिनेटर में 9 into 9 जो है वो 81 होगा, बट अंडर रूट ऑफ 3 into अंडर रूट ऑफ 3 क्या होगा? What will be under root of 3 and under root of 3? If we multiply them, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर यानी कि 3 होगा ना. So 81 3s are 243. So ओके, तो वेदांत तुम्हारा डाउट सॉल्व हुआ या फिर अभी भी डाउट है? अगर Sir, अभी भी डाउट है तो यू क्लियर ना? ओके फाइन, दैट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. So shall we solve one more example or is it enough? Shall we take the next topic? I guess we should take next topic. Yeah, is it? Let's go further. So these are few rules here. We know that we are recalling the things. Okay, so we know that if a is greater than b, sorry, a is greater than 0 and b is greater than 0, then under root of ab can be written as under root of a into under root of b. ये हमें पता है. Okay, let me just zoom in. So a minus b into a plus b, that becomes a square minus b square. और अंडर रूट ऑफ ए का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो होता है ए, या फिर ए स्क्वायर का अगर हम रूट निकाले तो वो होता है ये सारी चीजें हमें पता है. आई नो, वी नो एवरीथिंग अबाउट इट. ओके, so what we have to do, we have to just apply these things on the examples. So we'll solve example 1 in which we have to multiply this whole bracket with under root of
under root of 2. How do we do this? We will first multiply this under root of 2 with under root of 8. So under root of 2 into under root of 8 is under root of 16. Then we have under root of 2 into under root of 18, that is under root of 36, and there is a addition between them. So under root of 16 is 4, under root of 36 is 6, so it will be 10. Okay, very easy calculation, is it? Similarly for this also, first we will multiply this with this, then this with this. Okay, and secondly we will multiply this with this and this with this. So this is how we do the multiplication. All right. Now binomial quadratic surd. So root of 5 plus root of 3 or 3 by 4 plus root of 5 are the binomial quadratic surds form. So root of 5 minus root of 3 or 3 by 4 minus root of 5 are also binomial quadratic surds. Okay, so if there are two terms, bi means 2, isn't it? Binomial. So bi means 2. If two terms are there, then we will say it as a binomial quadratic surd. So why are we learning about this? So if you see, we have seen one property, that is, in if in one bracket we have a plus b and in another bracket we have a minus b, then we have a square minus b square. That is the formula we know. Okay, but here we are taking under root of a as a, under root of b. Okay, so it will be under root of a square and under root of b square, that will be a minus b. So the thing we need to understand here is कि जब भी हम एक बाइनोमियल सर्ड को दूसरे बाइनोमियल सर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज क्वाइट आइडेंटिकल टू द फर्स्ट बाइनोमियल सर्ड, but there is a difference of sign, then what we get a rational number. This is the only thing we need to remember. ओके, तो बाकी भी यहाँ पे देखो, अंडर रूट ऑफ 3 है, अंडर रूट ऑफ 7 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस को हमने माइनस के साथ में मल्टीप्लाई किया. सो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 3, under root of 7 square is 7, so it will be minus 4. Minus 4 is also a rational number. Okay, it doesn't matter, even if it is negative, it is a rational number. Okay, so in this case we have one rational number, one irrational number, and we are similarly multiplying with its what we can say conjugate part or conjugate pair, and we are getting a rational number. So students, one thing you need to remember is, let us suppose if root of 5 plus root of 3 is a binomial surd, and this is again a binomial surd. So these two are conjugate pairs. Why conjugate pairs? There is a difference of sign only. Okay, here it is positive, here it is negative. Let us suppose we have given one example and in which the sign is negative, so its conjugate will be same number, but there will be change in sign. ओके, तो यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये सीखना है. तो इट इज़ वेरी इजी. 7 प्लस रूट 3 का अगर हमें कॉन्जुगेट पेयर निकालना है, सो दैट विल बी 7 माइनस रूट 3. सिर्फ यहाँ पे मैंने साइन चेंज किया, पॉजिटिव की जगह पे मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा, एंड इफ नेगेटिव वुड हैव बीन देयर आई वुड हैव राइट पॉजिटिव. ओके, सिर्फ हमें साइन को उल्टा करना है. ओके, दैट इज बीइंग सेड. Now, the product of conjugate pair of binomial surds is always rational number, that we have already seen from some of the examples. Now, the next thing we are going to learn is rationalizing the denominator, which we have already learned. But in those cases, the denominator was a single term. मतलब कि जब जो भी हमने rationalize किया denominator पिछले कुछ examples में, उसमें क्या था कि जो हमारा denominator है, sorry, ओके, सो उसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर एक सिंगल टर्म था, लेकिन अब जो हम एक डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने जा रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर में दो टर्म्स रहेंगे. लाइक वी हैव टू यूज कॉन्जुगेट पेयर्स हियर, या जो हमने सीखा ना अभी, तो वो हमें यहाँ पे यूज करना है. नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज rationalize the denominator, and the given example says 1 by under root of
5 minus under root of 3. So what we have to do, we have to multiply and divide with its rationalizing factor or conjugate pair. We can say both. Rationalizing factor is also a name and conjugate pair is also a name. So we have to multiply and divide with it. So as we know, this is a माइनस बी, दिस इज ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे क्या आने वाला है, एक रैशनल नंबर आने वाला है, विच इज आवर aim. We have to rationalize the denominator only. It is okay if the numerator is having irrational values. Okay, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को rationalize करना होता है. So simply क्या करना है हमें, we have to multiply and divide with the conjugate pair. That is the thing we need to remember. So the next example is solved example 8 divided by 3 under root 2 plus under root 5. So इसका conjugate pair या फिर rationalizing factor जो रहेगा वो रहेगा 3 root 2 minus root of 5. यहाँ पे positive है, negative लेना पड़ेगा. Okay, so इसको हमें multiply और divide करना है. We will get a rationalized denominator. Okay, so try first one को solve करो. चलो everyone, try solving first one. Multiplication करना है, it is quite easy. Take your notebook, pen and try solving. I hope everyone is solving. Those who are not solving, pay attention here. Root of 3 multiplied by root of 7 is under root 21, and root of 3 minus root of multiplied by minus root of 3, that will be 3. So this is the answer. I have this answer. So मैंने आपको बोला है कि इस आंसर को आपको चैट बॉक्स में कैसे लिखना है. You have to write it like this: R21 minus 3. This is the format that you will write your answer in the chat box. है कि नहीं? Yes. Okay, fine. So how many of you are using computer as for computer or laptop for your classes? How many? We are going to do one experiment. Okay, are you excited? Okay. Okay, Vedant and Ayush are using the computer. No worries. जो लोग computer use नहीं कर रहे, mobile use कर रहे हैं, that is also fine. What we are going to do, students, अभी जो हमारा second question है ना, कौन सा question है? 5 root of 5 minus root of 7 into root of 2. तो ये आप में से कोई एक सॉल्व करेगा. ओके, तो किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द व्हाइट बोर्ड, जिसपे कि आप भी लिख सकते हो. ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके, एंड टेल मी. जस्ट अ सेकेंड. Okay, so the Jamboard is shared here. Okay, so how many of you can access this? How many of you can open this on computer? Whoever has accessed this Jamboard, please write your name in on the chat Jamboard. Write your name. Okay, Ayush has joined. Ayush, can you
pick the pencil and write your name there, or text box. See, this is the text box. Let me just show you. This is the text box. Okay, you have to drag it here, write something like Ayush. Okay, so you will write like this. So I'm erasing this. Try it, Ayush. Everyone try it. सब लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है और यहाँ पे ट्राई करना है. सब लोग को लिंक पे क्लिक करना. मोबाइल पे हो तो ट्राई करना, अगर कंप्यूटर पे हो तो वो तो हो ही जाएगा. ठीक है, दो लोगों ने ज्वाइन किया है. सो टेक टेक्स्ट बॉक्स एंड कैन यू डू दिस? कैन यू राइट योर नेम? Are you able to write your name? Because I can't see you people writing. No? Yes? No? बताओ. Sorry. Now try it. Okay. Now try it. Everyone, take this text box. Take this text box. Yeah, I will show you the question. No worries. But first of all, try writing. Can you write? First thing is that. Okay. So click on the text box. The T option is there, isn't it? Here it is. Okay. And draw one text box and write something like I am writing the now a name Vedant. Okay. So इस तरीके से आपको लिखना है. Try it. Your device isn't compatible with this version. All right. What about others? What about others? बाकी लोग लिख पा रहे हो या फिर नहीं? Do one thing. Close the tab, and join again. Okay, close the tab, and I will share the link again so that you can do this again. Close the tab, everyone. And okay, everyone, close. Three people are still there on the board. Two. Okay, who two are there? Close the tab. And here goes the link. Please try it now. Go on the link again and try writing. ठीक है, अभी सब लोग आ गए. टेक्स्ट बॉक्स पे जाना अभी. टी पे क्लिक करना. ओके, somebody has able to write. आयुष. आयुष पेंसिल नहीं यूज करना है. ओके, आयुष पेंसिल नहीं यूज करना है, टेक्स्ट बॉक्स यूज करना है. टी. ठीक है. ओके, आयुष इज एबल. नाउ हु एल्स इज राइटिंग? ओके, आयुष हैज रिटन. फाइन. ये टेक्स्ट बॉक्स है टी यहाँ पे. दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स यू हैव टू पिक एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस. ओके, सी. जो लोग एक्सेस कर पा रहे हैं वो लोग लिखो यहाँ पे. अपना नाम लिखो सब लोग, जो लोग एक्सेस कर पा रहे हैं. Okay, Bhakti is also able to write the name. But Bhakti, you are still writing with the uh, pencil. Okay, you don't have to use pencil, you have to use text box. बाकी लोग लीव कर रहे हैं क्या? Okay, okay, Vishal, fine, ठीक है. So this was just an experiment that you can also write on the whiteboard. Okay, if needed. All right. ठीक है, तो मोबाइल पे जो तुम्हारा सेटअप है वो तुम कर लेना बाद में. ठीक है. Now everybody is able to writing. Okay, Kadambari is now writing, I guess. Is it? Yeah, fine. So this will be helpful for what? This will be helpful for solving the examples. Now everyone stop writing. Okay, I will stop showing it also. Okay, so I have stopped sharing. All right.
ठीक है. So चलो. So now you cannot write on that tab particular. Okay. Did you student enjoyed this? अच्छा लगा? मतलब कुछ नया है ऐसा लगा? Okay. Enjoyed everyone? Okay. So what we will do, we will try to bring it in your practice. ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे आगे के लेक्चर्स में यूज करेंगे. दिस वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड आई होप कि एवरी वन ऑफ यू वाज एबल टू राइट. हु वाज नॉट एबल टू राइट? Vedant, Vishal, was that you? Yeah, Vishal was not able to write. So Vishal, what you have to do? I guess there are students who have written from mobile also, right? बराबर ना? कादम्बरी मोबाइल से लिख रहे थे आप या फिर you were okay. Vishal is having laptop. Still, it is showing problem. So Kadambari was writing from mobile. Ayush was writing from. Okay, yeah, fine. So Bhakti was also writing from mobile. So it is possible to write on mobile also. That was just an experiment. ठीक है. So ये हमें किस लिए काम आएगा? ये हमें काम आएगा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए. ऑलराइट. तो ठीक है. चलो नाउ next example. So I will not solve this example. I will solve this example for you. Okay. So how do we solve this? How do we solve this? Simply we have to multiply this with this first and this with this after that. So 3 into 4 is 12. Root 2 into root 3 is under root 6. 3 root 2 into minus root 2 is minus 3 into 2 minus minus root 3 into 4 root 3, that is minus 4 into root into 3, and minus root 3 into minus root 2 is equals to positive root of 6. I hope आप में से किसी को भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा. So 12 root of 6 plus root of 6 is 13 root of 6, minus 3 into 2 is 6, and minus 4 into 3 is 12. So it will be 13 minus, sorry, 13 root of 6 minus 18. यही आंसर है. Correct? Clear? Everyone? No doubt. All right. Anyone else? 13 root of 6 minus 18. इसमें कोई डाउट है? Guys, I guess जब हमने क्लास शुरू किया था तो तब 11 स्टूडेंट्स थे. नाउ ओनली 9 आर देयर. So why this is happening? I guess Vaishnavi has left, and who else? Do you remember? Okay, no worries. Whoever has left, no worries. So yeah, let's. This is done. This is done. Okay, multiplication part is done. Now we will do the rationalization part. Okay, rationalization part. So for this, what will be the rationalizing factor, students? What will be the rationalizing factor? लिखो चैट बॉक्स में. It will be what? चैट बॉक्स में लिखो, लिख सकते हो ना आप. रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या रहेगा? किस चीज से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हियर? Root of 7 plus root of 2. Is that, Kadambari, correct? Do you think it is correct? A rationalizing factor will be having same elements but the opposite sign. Is yes or no? So the rationalizing factor for this will be 7 under root 7 minus under root 2 divided by under root 7 minus under root 2. This will be the rationalizing factor. Okay, correct yourself. All right. Now
If we multiply this, what it will be? 1 into anything will be the same thing. So that is under root 7 minus under root 2. And now we know in one bracket a minus b is there, in another bracket a, sorry, a, in one bracket a plus b is there, in another bracket a minus b is there. So we have a square minus b square. So what is a here? A is root of 7. So a square will be 7 only, एंड माइनस बी स्क्वायर, अभी यहाँ पे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो हम यहाँ पे हमेशा माइनस ही लेंगे. ओके, रिमेंबर दिस. In the denominator it will be always negative, because write down the formula. If we have in one bracket a plus b, in another bracket a minus b, okay, so it will be a square minus b square, always minus is here always. Okay, so this is the formula, don't get confused in it. Now b square is what? B square is 2. So final answer will be under root of 7 minus under root of 2 divided by 5. अभी ऐसा मत करना कि अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5 कर दिया और नीचे 5 लिख दिया. दिस इज रॉन्ग. इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती है, ये आपको पता है ना. ओके, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके से नहीं होती है. सो दिस इज सॉल्व्ड. तो ये करेक्ट आंसर है. दिस इज करेक्ट आंसर. ओके, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज रॉन्ग आंसर. ओके, नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट वन. और एनी अदर एग्जांपल डू यू वांट मी टू सॉल्व? बताओ कौन सा सॉल्व करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, विच वन शैल आई सॉल्व? फोर्थ वन. ओके, फोर्थ वन ठीक है, चलो. सो फोर्थ वन सॉल्व करते हैं. फोर्थ वन के लिए मुझे एक नया पेज चाहिए. सो मैं अभी नया पेज ले लेता हूँ. जस्ट वेट. Here we go. Okay, so this is a blank page here. And what is the question we had? We had question that is under root of 5 minus under root of 3 divided by under root of 5 plus under root of 3. Was this the question? This is the question. All right, यही question है ना, बराबर. Yeah. uh, so two, okay, somebody was saying 2. Okay, we will take second also, no issues. So this is the question. So what we will do, we will multiply with its rationalizing factor. What it will be, students? What it will be? Rationalizing factor क्या रहेगा? आप बताना. हमें rationalize करना क्या है? हमें rationalize denominator करना है, बराबर ना? So we have to think according to that. We have to think about denominator only. Don't worry about numerator. So r5 minus r3, that is root of 5 minus root of 3, will be our rationalizing factor. ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 3 से मैंने डिवाइड भी कर दिया सेम से. ओके, सो ये कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब चेंज नहीं होगी वैल्यू यहाँ पे. सो इन द न्यूमरेटर व्हाट इट विल बी? इट विल बी root of 5 into root of 5 is 5, root of 5 into minus root 3 is 5 root 3. Now minus root 3 into minus 5 is minus root of 15. 5 3s are 15, and minus minus becomes plus. Root of 3 into root of 3 is 3, right? Divided by, in one bracket we have a plus b, in another bracket we have a minus b, so it will be a square, that is 5, and b square, that is 3. Okay, so if we again simplify this, 5 plus 3 is 8, and minus, now this can be again written as, okay, can we simplify this? No, we cannot simplify this 15. So let it be there like that only. So 5 root 3 minus root of 15 divided by 2. Okay, so this should be the final answer. Okay, this should be the final answer. Is it okay, students? Or do you think that I made mistake somewhere?
Correct? It should be like this only. All right. Just a second, huh? Just a second, students. Uh, 5 into 5 is 5. Okay. 5 into root 3 is minus 5. Minus 5. No, wait, students. We are making a mistake here. See, this root of 5 into 5 is 5. This root of 5 into this root of 3, it should be minus 15 only here also. Isn't it? So I wrote it like 5 root of 3. So that is wrong. So it is wrong. Okay. Let me just write it again. I was thinking like we are making some mistakes. So I wasn't just capturing what it was. Okay. So what it will be? Root of 5 into root of 5, that is 5, which is correct. But root of 5 into minus root of 3 is minus 15. Na? Again, minus root of 3 into minus plus root of 5 is again minus root of 15. Now, minus root of 3 into minus root of 3 is plus 3 divided by 5 minus 3. So it will be 5 plus 3 is 8 minus 2 root of 15 by 2, which is equals to 4 minus root of 15. Okay, so this is the correct answer. 4 minus root of 15 is correct answer. I hope you got the mistake that we made. All right. ठीक है, तो इस तरीके से मिस्टेक हो सकती है. सिली मिस्टेक्स, दिस इज कॉल्ड. क्लियर फॉर एवरीवन? क्लियर? यस, ओके. ओके एवरीवन, जिसको समझ में नहीं आया लिखो यहाँ पे चैट बॉक्स में. सर समझ में नहीं आया, फिर से बताओ. सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया, थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सारे स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए. ठीक है ना? सो आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं समझ के चल रहा हूँ कि सब लोगों को समझ में आ गया है. ठीक है. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. Somebody said, sir, please take the second one also. So we'll take second one also. Okay. So rationalizing factor for second one. Rationalizing factor for second one. It will be 2 root of 5 plus 3 root 2. Okay. So let me just write the example on the separate page. I won't be showing you the separate page as of now. So this is 3. What is the question? 2 root of 5 minus 3 root 2. 2 root of 5 minus 3 root 2. So this is the question, right? So we have to multiply and divide with the rationalizing factor, that is 2 root of 5 plus 3 root 2 divided by 2 root of 5 plus 3 root 2. यहाँ पे नेगेटिव था तो मैंने पॉजिटिव ले लिया. ओके. So how do we solve this? 3 into 2 root 5 is 6 root of 5. 3 into 3 is 9 root of 2. Now in the denominator we have a minus b, a plus b. So we'll take a square. A square is 2 square is 4 and root of 5 square is 5 minus b square is 3 square is 9 and root 2 square is 2. So it will be, I'll take 3 common. So it will be 2 root of 5 plus 3 root 2 divided by 5 4s are 20, 9 2s are 18. Is that 5 4s are 20, 9 2s are 18. So it will be 3 by 2 into 2 root of 5 plus 3 root 2. Got it? This should be it. 3 by 2 into 2 root of 5 plus
3 रूट 2। अंडरस्टूड? चलो, सो गए क्या? सो रहे हो या फिर खाना खा रहे हो? टेल मी द ट्रूथ। Are you feeling sleepy, or are you having your dinner? Don't have your dinner in the class. Okay, I'm also eating. Vishal, this is not good. Okay. Okay, Vedant is noting it down. That's really great. Okay, very good. Everybody should practice this. सब लोगों ने notebook पे लिख के लेना है. Okay, Vishal, I'm gonna talk to your mother and father tomorrow. You eat while having class. That is not a good thing. Okay, you have to write down the things. All right. ठीक है, चलो. So, what is our next topic then? Our next topic will be absolute value. So, what is absolute value? Okay. So, what is absolute value? Absolute value is, if x is a real number, then absolute value of x is its distance from 0 on the number line, which is written as mod of x, and this is also read as absolute value of x or modulus of x. So ठीक है. So आपको कभी भी ऐसा symbol दिखेगा ना, like two lines are there and in between the number is written, so it is called it is read as absolute value of x or modulus of x. Okay, modulus of x or mod of x. If we um, call it in a short form, it will be mod of x. Okay. Now, what is the significance of this mod of x? How is it important, or why is it important? So it is basically a distance. It is basically what? It is basically a distance of the point from the center of the what we can say graph. Okay. और जीरो ऑन द नंबर लाइन पे जीरो रहता है ना, तो उससे उसका डिस्टेंस एक हम कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉड ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. सो कैन द डिस्टेंस बी नेगेटिव एनी टाइम? मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा? इट इज नॉट पॉसिबल. डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. इट कैन बी आइदर जीरो और इट कैन बी पॉजिटिव. बराबर ना? So since this mod of x represents the distance, so remember one thing, whenever you see this symbol, consider that the value of x can never be negative. It will be positive only. Whatever is the value between these two lines or modulus, that should be always positive. So let us suppose x is greater than 0, that means x is positive. Then mod of x is equals to x, मतलब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा. इफ x की वैल्यू 0 है तो mod of x क्या रहेगा? 0 रहेगा. लेकिन इफ x इज स्मॉलर देन 0, मतलब 0 से छोटा है, नेगेटिव है, देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ x शुड बी x ओनली. यहाँ पे गलत लिखा है. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. इट शुड बी लाइक दिस. मैं यहाँ पे लिखता हूँ. ओके, जस्ट वेट. Correct this in your books. Mod of minus x is also x. ठीक है, ये गलत है. ऑल राइट. सो mod of minus x is also x. मतलब mod के बाहर अगर हम उसको वैल्यू को लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलती है. इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही हो. x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. कब कुछ भी हो सकती है? when it is inside that ब्रैकेट और टू लाइन्स. अभी अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें तो इन दिस एग्जाम्पल सी, mod of 3 is mod of 3, but mod of minus 3 is 3. Mod of minus 3 is 3, but if you see what is the value of x here, it is minus 3. जब वो mod में है तो इसकी वैल्यू minus 3 है, बट जब वो mod से बाहर आया तो उसकी वैल्यू 3 बनी. So one thing you have to remember is that कि mod के अंदर x की वैल्यू it can be positive, negative or 0, but when that value comes out of mod, then we take it as a positive or 0 only. 0 कब? जब 0 कैलकुलेशन से आ रही है तब. और पॉजिटिव कब? जब पॉजिटिव भी आ रही है या फिर नेगेटिव भी आ रही है, डजेंट मैटर, इट शुड बी पॉजिटिव. आउट ऑफ अगर हम उसे ब्रैकेट लिखेंगे तो ये क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा.
Let us see few more examples. So first example is 9 minus 5. It is 4, mod of 4. And inside mod we have 9 minus 5, so it is 4. So it is already positive, so it will be positive only. But if we take mod of 8 minus 13, so 8 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो it will be minus 5. So mod of minus 5 will be what? Mod of minus 5 will be 5. पॉजिटिव लेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें मॉड को कंसिडर करना है। सो जब हम मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में देखो क्या होता है, 8 माइनस सॉरी मल्टीप्लीकेशन में मॉड ऑफ 8 माइनस मॉड ऑफ 4। ओके, सो 8 इंटू 4 इज 32। सो यहाँ पे अगर 8 नेगेटिव रहेगा, 4 नेगेटिव रहेगा या फिर दोनों नेगेटिव रहेंगे, डजेंट मैटर, द डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव 38 32, ऑलवेज 32। डजेंट मैटर विच वन इज नेगेटिव एंड विच वन इज पॉजिटिव। मॉड में है तो जब वो मॉड से बाहर आएगा इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव ओनली। वन मोर थिंग आई एम रिपीटिंग, मॉड के अंदर उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सर आप ऐसे ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो कि सर ये मॉड के अंदर कुछ भी वैल्यू रह सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, नाउ टेक दिस एग्जांपल एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सर आपने कहा था कि एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव रहेगी नहीं, लेकिन मैंने ये कहा था कि एक्स की वैल्यू जब ब्रैकेट के बाहर आएगी तब वो नेगेटिव नहीं रहेगी, अगर वो ब्रैकेट के अंदर है कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो 8 माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 5 है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो 8x विल बी इक्वल टू सॉरी 8 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 10, isn't it? So x will be equal to 8 minus 10. So x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, -2 आई। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, माइनस आई। लेकिन जब मैं इसे इनसाइड द ब्रैकेट रखता हूं तो क्या बनेगा, देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा। 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर था, इसके लिए मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 ले पा रहा हूं। ओके, बट इन केस इफ अगर मतलब हम ब्रैकेट के अगर उसे बाहर ले रहे हैं, सो इट शुड बी टेकन पॉजिटिव। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर गाइस? व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? इट शुड बी -2। क्लियर? क्लियर? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स ओनली, इट शुड बी -2। ठीक है, चलो, सो दैट इज इट, दिस वाज इट। ओके, तो पहले मॉड्यूलस निकालना था हमें। फाइंड आउट फॉर द सेकंड वन, सेकंड वन का मॉड्यूलस निकालो। 4 माइनस 9 का मॉड्यूलस निकालो। Mod of 4 minus 9, what it will be? Very simple, simplest. It is clearly 5. It is 5 only. Third one, थर्ड वन का क्या रहेगा? 28. 7 fours are 28. We don't consider the negative sign. Isn't it simpler? Now, find the value of x for fifth one, fourth one. Find the value of x for fourth one. इक्वेट करो ना, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो देखोगे कि बहुत इजी है एक्स का वैल्यू निकालना यहाँ पे फोर्थ वन में। नोबडी? एक्स का वैल्यू 15, हाउ कम? No, 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 no. Wait, wait, wait. See, simplify this. How do we simplify this? Let me just erase this everything. So we'll simplify it like 5 plus x by 4 is equals to 5 है। तो 5 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा जो जिससे मुझे 5 मिलेगा? What shall I add in 5 to get 5? Nothing, na? I have to add nothing. 0, isn't it? So x की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी।
सो एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो बाई फोर जीरो रहेगा, सो फाइव इज इक्वल्स टू फाइव होगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेट अस सपोज एक्स बाय फोर इज इक्वल्स टू फाइव माइनस फाइव है, दैट इज इक्वल टू जीरो है। सो एक्स बाय फोर इज इक्वल्स टू अगर जीरो है तो एक्स इज इक्वल्स टू भी तो जीरो ही आएगा। ऑलराइट, सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो आनी चाहिए। ठीक है, सो इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स अपना जो सेकंड चैप्टर है रियल नंबर्स वाला वो खत्म हो गया है। Mostly we will take some of the examples from these problem set and this activity, okay, in the next class, and then we will start the chapter polynomials. All right, so that's it for today. Okay, so bye bye for today. We'll see you in the next class. Bye. Now you are free to leave the class. Bye bye. Yeah, Vishal, we'll discuss in the next class what is polynomial. Okay, don't worry, it is very easy. Okay, polynomials are very easy, don't worry. We'll discuss that in the next class. Fine. Now leave the class. Okay, thanks. Bye bye. Chalo. Chalo, leave the class. Quickly leave the class. Yeah. Yeah, bye.